Yes. Just give me a second. Yes, good evening, Tutu. Yes, good evening, everyone. So, without wasting much time, let's start today's session. Actually, I was preparing some new questions. आपको थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस बना रहे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. यस, कहाँ पे है शेयर? यस. So, I'm sharing the screen. Yes. Okay, it is visible. Okay. So till yesterday we have done the all this we have done. Strip cropping, chisel, plow. We have done. Where were we? Acha, we did till percolation pond. No, micro catchments. Farm ponds we have done. This also we have done. Okay, check dams we have to do. Sorry. So we have done all this. Okay, key line designs. This also we have done. So from here we have to start. After this, we'll be doing some MCQs. And kindly understand, I could prepare only few MCQs today because एक इस पे concept पे I'm preparing questions. So आज कम ही questions होंगे. Tomorrow I'll make up for it. तो उसमें कल हम लोग सिर्फ 20-25 minutes last exclusively MCQs ही करेंगे कल. ठीक है? Yes, coming to today's session. So key line designs. Now, what are these key line designs? Now, key line designs generally India में कम ही use होता है, and these are majorly used in in Western countries जहाँ पे बहुत ज़्यादा hilly terrain है. Okay. Now, what are these key lines? Key lines actually are enhanced contours. जो normally contours है उन्हीं को थोड़ा enhance करते हैं. मतलब which bunding or channel sort of, which collect and direct water on the sloping land without any need for terracing. Now, all this, जो भी ये collect हो रहा है water, that water would be collected into dammed ponds. पूरा एक pond की तरह structure बना के in that all this water would be directed specifically and is then drip fed by gravity irrigation for crops and animals.
Okay, and the key lines are carefully chosen and all these are done. जो भी कैचमेंट एरिया है उसी में ये की लाइंस को डेवलप करते हैं जहां पे मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव होता है, so that to ensure maximum water collection potential, thereby using that for क्रॉप्स, लाइवस्टॉक के लिए भी एंड सॉरी एग्रीकल्चर के लिए भी एंड क्रॉप्स के लिए, रेगुलर क्रॉप्स एंड एनिमल्स as well as collecting water. Key line design, it is designed in such a way that it reduces the soil erosion and flooding and gathers the nutrients which build up soil fertility over time. So वो इस तरह से बनाते जैसे वो channels या जो भी enhanced contours है, in such a way that rather than completely डिस्टर्बिंग द टेरेन, उस टेरेन को डिस्टर्ब करने की जगह इट विल ऑल्सो स्लोली बिल्ड अप द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो सॉइल इरोजन को बिल्कुल अवॉइड करता है एंड ऑल्सो फ्लडिंग, देयर बाय ओनली जो रन ऑफ वाटर है, मेजर रन ऑफ वाटर विदाउट लूजिंग मच सॉइल, ओनली दैट वाटर वुड बी रीडायरेक्टेड इनटू दीज डैम्ड पॉन्ड्स। ठीक है, ये हो गया की लाइन डिजाइन। नेक्स्ट आता है हमारा की लाइन डिजाइन। यहाँ तक कई सारे ऐसे है कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है मेजरली वाटर इरोजन को अवॉइड करने के लिए। नाउ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, उसमें विंड भी है। नाउ विंड इरोजन को किस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, राइट? सो इन दैट केस, इन दोज मैटर, जो सॉइल कंजर्वेशन, एक्सक्लूसिवली सॉइल कंजर्वेशन जो प्रैक्टिस है इन दोज एरियाज वेयर विंड इरोजन इज मैक्सिमम, वहां पे विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स बहुत यूज होते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर दिस? Now, wind breaks are such structures which break the wind flow and reduce the wind speed. Okay, उसका बिल्कुल फ्लो को रोक के विंड स्पीड को रिड्यूस करती है, उसकी वजह से जो डैमेज हो सकता था अर्लियर दैट कैन बी अवॉइडेड, लाइक योर विंड एरोजन और प्लांट्स को जो मॉइस्चर है, ट्रांसपिरेशन बहुत हाई लेवल पे होता है बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस एयर या विंड मॉइस्चर निकालता रहता, ड्राई करता रहता, अगेन दे विल they have to take up more water, so उसकी वजह से, so in this case they will act as both water conservation as well as soil conservation. ठीक है, while shelter belts are rows of trees or shrubs planted for protection of crop against the winds, these will be giving the shelter against the wind to the crops, okay, regular crops, so that उनका lodging ना हो, फिर उनका मॉइस्चर लॉस कम हो, विंड इरोजन कम हो, उनके जो ग्रोथ पे जो इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस हाई फ्लोइंग और हेवी विंड्स वो कम हो, फॉर ऑल दैट दिस वुड बी हेल्पफुल। एंड शेल्टर बेड्स ऑलवेज रोस में होता है एंड विंड बेल्स जनरली सिंगल रो में होता है, सो इम्पॉर्टेंट। A row of trees and shrubs planted across the wind direction is the most effective. जब see in this case you can see this is the wind direction, always wind direction के 90 perpendicularly the crops would be sown always. Okay, these rather than crops I should say wind breaks and shelter belts. Okay, and it reduces the wind speed up to 60 to 80% on the leeward side. Now ये हमारा हो गया windward side, ठीक है, जहां से विंड ब्लो कर रहा है। ना विंड इनको पास करके उस तरफ जाना है ना, दैट वुड बी लीवर्ड साइड। ओके, सो लीवर्ड साइड पे बिकॉज ऑफ दिस शेल्टर बेड 60 to 80% विंड स्पीड को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। Windbreaks and shelter belts provide the protective shelter against desiccating winds. They desiccate, they remove the moisture, okay, to extent of 5 to 10 times the height of the tree on windward side and 30 times on the leeward side. So you can understand the kind of impact that they are making. So windward side में जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, they'll provide, 5 to 10 times हाइट ऑफ द टॉल ट्री, उतना वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं इन रिड्यूसिंग दैट डेसिकेशन। वही आप लीवर्ड में तो 30 टाइम्स मोर, ओके, उतना वो प्रोटेक्शन दे सकते, मतलब 30 टाइम्स height than them they can provide the protection. See, for example, a 10 to 11 meter tall windbreak, when encountered by 40 to 50 kilometers per hour wind, it reduces on wind side to 20 to 30 kilometers per hour and 10 kilometers per hour on leeward side, मतलब उतना speed कम कर सकता है।
At an interval of 300 meters, such wind breaks should be repeated. ये भी important है. Okay. The windbreaks and shelter beds should be formed in northwest direction because they are planted at what you say perpendicular to the wind direction. So here windbreak should be planted at right angles to the prevailing wind क्योंकि east साउथ उस डायरेक्शन से हमें विंड ज्यादा आती है ईस्ट से मेजरली. सो फॉर विच नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत इफेक्टिव रहता है. सो हियर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ विंड ब्रेक इज सेट टू बी फेल्ट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्रीज इन द विंड ब्रेक. सो विंड ब्रेक में जो ट्रीज का हाइट है उससे 20 टाइम्स हाइट, मतलब अगर ये ट्री है ये 1 मीटर है विंड ब्रेक में. सो यहाँ से जो 20 मतलब 20 मीटर्स डिस्टेंस तक, ओके, इट कैन बी फेल्ट. इतना 20 मीटर्स डिस्टेंस तक इसका इम्पैक्ट यू कैन फील दैट. मतलब वो डेसिकेटिंग उनका स्पीड रोकना, उनका जो मॉइस डेसिकेटिंग मीन से उनका बिल्कुल आई मीन एंटर ही नहीं होने देना, उसकी इंटेंसिटी कम करना, ऑल दैट कैन बी फेल्ट टिल 20 मीटर्स इनके हाइट से एटलीस्ट 20 टाइम्स. Generally, it can either consist of a single line of trees with a spacing of 1.5 to 2 meters or two lines with a spacing of 4 to 5 meters within the line and 2 to 4 meters between the lines. मतलब 2 rows फिर थोड़ा सा space फिर 2 उस तरह से भी कर सकते हैं. In addition to 1 or 2 of lines of the trees, a line of shrubs spaced approximately 1 meter can be planted on side facing the prevailing wind. इससे क्या होता है, जो उसका जो इम्पैक्ट रहता है डेसिकेशन एंड ऑल दैट, दैट कैन बी ब्रॉट डाउन. अलोंग विद दैट इस तरफ भी थोड़ा सा उसका जो स्पीड, विंड का जो स्पीड पे जो इम्पैक्ट होता है दैट कैन बी ब्रॉट डाउन. ओके, सो हियर दिस इज वन अबाउट विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स. अच्छा, इसमें मैं एक और स्लाइड भूल गई. कैन यू गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स हैं related to the type of trees that can be planted as wind breaks and shelter belts. बहुत बड़ा वो है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अभी बता देती हूँ. मैं कहाँ रखा था. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वही ढूंढ रही हूँ कि मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट है ना, कहाँ पे रखा है वो ढूंढ रही हूँ. क्योंकि अभी वो भी दे दूंगी तो काम हो जाएगा, वरना यू विल बी कीप ऑन सर्चिंग फॉर दैट. सेकेंड पार्ट, पार्ट 2 में होना चाहिए. यस, मिल गया है.
ये है एग्जाम्पल, सॉरी आई केप्ट यू ऑल वेटिंग, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से ऐसे स्पीशीज है जो, यस, ये है सारे एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीशीज लाइक acacia, albizia, cardium, nona, Zadiracta indica, balanitis. Again, all these based on the kind of soils that are present and the climatic conditions that prevail in that area, they can use. Okay, ये हो गया हमारा विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स, एंड जहां पे भी मैंने स्टार मार्क किया है दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्लीज फोकस ऑन देम while you go through the content. Now, coming to the next important topic for soils is properties of soils. These are the various properties of soils that you can see here. सबसे पहले आता है soil texture. Now, soil texture क्या है? Now, soil texture is that when you know कि उस पर्टिकुलर, जैसे हमने कुछ सॉइल लिया, अगर हाथ में ही लिया है फॉर एग्जाम्पल, उस पर्टिकुलर सॉइल में क्या क्या है, मतलब सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, बेस्ड ऑन दैट ओनली उसका एक टेक्सचर बनता है कि रफ है, सॉफ्ट है, बहुत स्मूथ है. ओके, उस तरह से. सो हियर बिफोर गोइंग इनटू सॉइल टेक्सचर, आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पे कि उसका बेसिकली सैंड, सिल्ट और क्ले के साइजेस क्या है बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम. एक और भी है, यस दिस वुड बी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, ये 2 to 20 है. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सॉइल पार्टिकल्स इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, स्टोन फर्स्ट, सेकंड ग्रेवल, थर्ड फाइन अर्थ, फोर कोर्स सैंड, फाइव फाइन सैंड, सिक्स सिल्ट, सेवन क्ले. सो इतने तरह के पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स, मिनरल पार्टिकल्स. सो बेस्ड ऑन साइज वी आर टॉकिंग अबाउट, किस तरह का मिनरल है दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. सो बेस्ड ऑन दैट साइज, स्टोन उसको कहा जाता है जिसका साइज है ग्रेटर देन 20 mm डायमीटर. वही ग्रेवल 2 to 20 mm डायमीटर. फाइन अर्थ लेस देन 2 mm डायमीटर. कोर्स सैंड 0.2 to 2 mm इन डायमीटर. फाइन सैंड 0.2 to 0.02 mm इन डायमीटर. सिल्ट का साइज है 0.02 to 0.002 mm का डायमीटर. एंड क्ले का है पॉइंट लेस देन 0.002 डायमीटर. सो हमारे इसके जो टेक्सचर है, उस टेक्सचरल क्लासेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये फोर: कोर्स सैंड, फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले. एंड जनरली इन दोनों का भी एक ही में मानते हैं हम लोग, एंड दैट इज सैंड. सो हियर वी कैन से सैंड 2 to 0.02 mm. ओके, ये सिल्ट का हो गया, क्ले का हो गया. नाउ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज दैट दे हैव, वही प्रॉपर्टीज हमें उस टेक्सचुरल क्लासेस में होंगे. मतलब बेस्ड ऑन द टेक्सचर हम लोग सॉइल्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एंड उनके ईच क्लास का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट वुड बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दीज पार्टिकल्स. सो फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी टाइप है लाइक योर क्ले, सिल्ट एंड क्ले. एंड ये उनके प्रॉपर्टीज है लाइक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले का बहुत हाई रहता है, सिल्ट का मीडियम टू हाई रहता है, सैंड का बहुत लो रहता है. काइंड ऑफ एरेशन, क्ले में बहुत पुअर रहता है, सिल्ट में मीडियम रहता है, सैंड में बहुत हाई रहता है. एंड रेट ऑफ ड्रेनेज, क्ले में बहुत स्लो रहता है, सिल्ट में स्लो टू मीडियम रहता है, एंड सैंड में हाई रहता है. टिलेज आफ्टर रेन सूटेबिलिटी, रेन, एक बार रेन होने के बाद टिलेज करने के लिए वो सॉइल कितना सूटेबल रहेगा. जिसमें क्ले बहुत ज्यादा है, बहुत पुअर सूटेबिलिटी है. सिल्ट के लिए मीडियम है, सैंड के लिए गुड है क्योंकि उसका तो बिल्कुल ओपन वाला है. स्टोरेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, उनकी एबिलिटी क्या है,
ओके, क्ले का बहुत हाई है, वी नो व्हाई, कोलॉइडल कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उसकी वजह से दे विल बी एबल टू लैच ऑन टू द न्यूट्रिएंट्स वेरी इफेक्टिवली। सिल्ट के लिए मीडियम टू हाई एंड सैंड के लिए पुअर रहता है उसका स्टोरेज। सो ये प्लीज आप टेबल बिल्कुल ध्यान में रखिए, बिकॉज इसी के बेसिस पे जो हमारे टेक्सचुरल क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो रहेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस। सो ये हो गया हमारा जो हमने अभी देखा है सॉइल टेक्सचर के लिए। So soil texture is a classification instrument used both in the field and laboratory to determine soil classes based on their physical texture. किस तरह से है वो physical texture? Now soil texture can be determined using qualitative methods. You know, ओनली क्वालिटी मतलब क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली हम लोग मेथड्स यूज कर सकते हैं, लाइक टेक्सचर बाय फील, मतलब हाथ में लेके भी हम लोग ऐसे फील करते हुए बोल सकते हैं अच्छा इसमें सैंड ज्यादा है, नहीं ये तो बहुत सॉफ्ट है, इसमें क्ले ज्यादा है। अगर उसमें उसमें थोड़ा पानी मिला के करेंगे तो सैंड तो बिल्कुल क्रम्बल हो रहा है, तो मतलब ये सैंडी टेक्सचर है। या फिर रिबन्स बना के भी वो लंबे लंबे रिबन्स बन रहे हैं, मतलब क्ले बहुत ज्यादा है इसमें। उस तरह से क्वालिटेटिवली हम लोग बता सकते हैं बाय टेक्सचर बाय फील मेथड। वही क्वांटिटेटिव मेथड से सच एज हाइड्रोमीटर मेथड बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। नाउ व्हाट डज दिस से? फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट ट्यूब या बीकर में अगर हम लोग सॉइल पानी डालेंगे एंड इन दैट वी हैव पुट द सॉइल एंड मिक्स्ड इट। ओके, नाउ मिक्स करने के बाद व्हाट दिस हैज टू से इज बेस्ड ऑन द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, okay, the velocity of their the velocity at which those particles travel to settle down टू द बॉटम ऑफ दैट बीकर या टेस्ट ट्यूब जो भी है उस पर डिपेंडेंट रहेगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द स्पीड वेलोसिटी एट विच इट इज ट्रैवलिंग वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। ओके, सो जितनी जल्दी मतलब वो नीचे जा रहा है, सिंक हो रहा है, मतलब क्या है, उसका वेट हैवी होगा, डायमीटर ज्यादा है, मतलब डायमीटर ज्यादा है तो दैट वुड बी बड़ा पार्टिकल होगा, सैंड होगा या उससे बड़ा वाला होगा। एंड सस्पेंशन में ही है, बहुत टाइम लगा रहा है नीचे उतरने, मतलब उसमें क्ले है। सो एवरी फ्यू मिनट्स इंटरवल्स में वो देखते हैं, ओके, कितनी स्पीड से जा रहा है एंड ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर एंड ऑल दैट, एंड बेस्ड ऑन दैट दे कम टू ए कंक्लूजन दैट कि इसमें इतना परसेंटेज सैंड है, इतना परसेंटेज सिल्ट है, इतना परसेंटेज क्ले है। ओके, बेस्ड ऑन दैट दे से ओके दिस इज द एग्जैक्ट टेक्सचर। सो क्वांटिटेटिवली दे कैन से, मतलब बिल्कुल परफेक्टली कि ये टेक्सचर है इसका एंड ये इस क्लास में पड़ता है, मतलब इस क्लास में सेट होगा, इसमें जो क्लासेस अभी दिखा रहे हैं। बट वही क्वालिटेटिव में बेस्ड ऑन क्वालिटी हम लोग यहाँ फील मेथड वो लेके कर रहे हैं। देखिए, when we talk about the textural classes, ये सारे टेक्सचर से, if we look at this triangle, एक कोने में है हमारा क्ले, एक कोने में है हमारा सैंड एंड एक पे सिल्ट। now how these three are mixing with each other, based on that, based on the quantity of that mixture, different textural classes are there. So here these are the textural classes, very very important. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें एक्सक्लूसिव है सैंड, सिल्ट एंड क्ले, बाकी सब मिक्सेस में आते हैं। मतलब सैंड में 85 टू 100% सैंड ही रहेगा, सिल्ट 0 टू 15%, कभी 0 मैक्सिमम 15, उससे ज्यादा नहीं। क्ले 0 टू 10%। वही लोमी सैंड में 70 टू 90%, 0 टू 30% सिल्ट एंड 0 टू 15% क्ले। उस तरह से नो लाइक सिल्टी क्ले में सबसे ज्यादा क्ले रहेगा। देखिए, सो दीज आर द क्लासेस। नाउ इनको बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले दैट आर प्रेजेंट, 3 मेजर सॉइल्स हम लोग डिराइव कर सकते हैं। यस, first one sandy soils, second one loamy soils, third one clayey soils. Now sandy soils approximately 80 to 100% इसमें sandy रहेगा, 0 to 10% clay by volume और sometimes थोड़े बहुत silt. This is light and typically very free draining, usually holding water very poorly due to very low organic content. This we know sandy soils में वाटर रिटेंशन बहुत कम रहता है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन भी बहुत कम रहता है इसमें।
ठीक है। एंड ड्रेनेज इजी फ्री फ्लोइंग, ऐसे पानी डालोगे तो 2 मिनट में वहां गायब हो जाता है उस तरह से, बिकॉज ऑफ many macropores that help in gravitational pull, gravitational water चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोमी सॉइल्स। यहाँ अप्रोक्सीमेटली 25 to 50% सैंड रहेगा, 30 to 50% सिल्ट रहेगा, एंड 10 to 30% क्ले बाय वॉल्यूम। somewhat heavier than sandy soils but also tend to be fairly free draining, again due to typically low organic content, but again इसमें थोड़ी बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर से ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे तो इसको वी कैन ब्रिंग द न्यूट्रिएंट कैपेसिटी ऑफ दिस टू हाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो है ही इसका ऑलरेडी, ओके। एंड अगर ऑलरेडी उसमें ऑर्गेनिक मैटर है लोमी सॉइल्स में, देन डेफिनेटली वेरी फर्टाइल इन नेचर। अगर नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग ऑर्गेनिक मैटर भी डालेंगे तो यू कैन बिल्कुल उसका फर्टिलिटी लेवल ऊपर ला सकते हैं। एंड लोमी सॉइल्स आर द वन दैट आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट सॉइल्स फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। ये कौन है जो अभी प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, म्यूट, यस, क्योंकि दैट विल डिस्टर्ब द एंटायर क्लास। ओके, नेक्स्ट आता है क्ले सॉइल्स, अप्रोक्सीमेटली 0 to 45% सैंड, 0 to 45% silt, and 50 to 100% clay by volume. Not typically free draining, and water tends to take a long time to infiltrate. When wet, such soils tend to allow virtually all water to run off. Tend to be heavy and difficult to work when dry. कई सारी दिक्कतें हैं इसमें, but again nutrient holding capacity इनका high है and water holding भी high है, but for the entire profile to get wet, to imbibe that water and all that, it takes lot of time. That's why इनको उसी क्लास में रखा जाता है, मतलब उसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेट सॉइल्स टाइप का, ठीक है। ये हो गया हमारा टेक्सचरल क्लासेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये सारा डाटा एक बार देख लीजिए, ओके। सिंपल, यहाँ पे सैंडी सॉइल्स, लोम सॉइल्स एंड क्ले सॉइल्स का जो कंटेंट है वो आप याद रखोगे तो इवन इफ दे आस्क एनी ऑफ दिस लाइक सैंडी लोम, लोम सिल्ट लोम, ऑलमोस्ट इसी रेंज में पड़ेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में बाय चांस पूछ लिया है रेंजेस ऑफ सैंड, सिल्ट या क्ले, जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल वाला है। बट स्टिल इवन इफ दे आस्क, अगर ये परसेंटेजेस भी आप याद रखोगे तो आप ऑप्शंस में अदर देन इज क्लोज टू दिस परसेंटेजेस, जो अदर देन दोस परसेंटेजेस उनको हटा के आप यू कैन अराइव एट द आंसर, ऑड मैन आउट टाइप के निकालते हुए यू कैन अराइव एट द आंसर। सो ये बिल्कुल आप देख लीजिए परसेंटेजेस, ठीक है। नाउ जैसे मैंने बताया है क्वालिटेटिव फील मेथड उसी का ये है। सो व्हेन फील जब लेंगे, ग्रिटीनेस किस तरह से, डज नॉट रिबन और लीव ए स्टेन्ड स्मीयर ऑन द हैंड, उस तरह से है तो वी कैन पुट सच सॉइल्स अंडर सैंड या लोमी सैंड में डाल सकते हैं, एंड वी कैन कॉल देम एज सॉइल टेक्सचरल में कोर्स टू वेरी कोर्स। अगर वही ग्रिटी है, लीव्स स्मीयर ऑन हैंड, डज नॉट रिबन, ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस, सो इस तरह के सॉइल को हम लोग बोल सकते हैं सॉइल टेक्सचरल क्लास, सैंडिलोम। और ग्रुप, ग्रुप हम लोग डाल सकते हैं मॉडरेटली कोर्स से करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मूथ एंड फ्लोर लाइक, डज नॉट रिबन, ब्रेक्स इनटू पीसेस अबाउट हाफ इंच लॉन्ग और लेस। सो इन अगर इस तरह से हो रहा है जब हम लोग मिट्टी लेके कर रहे हैं सॉइल को, देन वी कैन पुट देम अंडर लोम, सिल्ट, लोम या सिल्ट एंड कोर्स जो टेक्सचरल ग्रुप है। ये चारों टेक्सचरल ग्रुप है एंड दीज आर द टेक्सचरल क्लासेस जस्ट वी हैव जस्ट नाउ सीन, दे कैन बी पुट अंडर दीज 4 टेक्सचरल ग्रुप्स, ओके। तो उनको मीडियम कोर्स ग्रुप में डाल सकते हैं। इट फॉर्म्स रिबन, क्लेस फॉर्म लॉन्गर रिबन्स देन क्लेलोम्स, क्लेलोम फील ग्रिटी, थोड़ा सा एक रफनेस भी आती है बट एट द सेम टाइम रिबन्स भी आराम से बना सकते हैं। सो इन दैट केस वी कैन पुट ऑल दोज काइंड्स ऑफ सॉइल्स अंडर दिस। तो ये इसमें से कुछ भी हो सकता है एंड देन इट इज मॉडरेटली फाइन, ओके। सो ये हो गया हमारा फील मेथड के इसमें, 1 सेकेंड।
ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सॉइल स्ट्रक्चर, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सॉइल स्ट्रक्चर का अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स and their aggregates into certain defined patterns, and this is called its soil structure. Now when we talk about, one second, yes, सो ये हो गया सॉइल स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। ना व्हाट आर द प्राइमरी पार्टिकल्स? अगर प्राइमरी पार्टिकल सॉइल पार्टिकल्स मतलब दैट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, ये प्राइमरी पार्टिकल्स है, बाकी सब जो उसमें मटेरियल्स है दूसरे वाले, उनके थ्रू वो ग्रुप हो जाते हैं, एंड दीज आर यूजुअली ग्रुप्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स. And soil aggregates are nothing but a group of soil particles that bind to each other more strongly than to adjacent particles. Those are called as soil aggregates. So soil aggregates में भी अगर naturally form हुआ है soil aggregates, उनको पेड्स बोलते हैं. Okay, पेड, पेडॉन, वो सब हमने देखा था. So that is naturally forming aggregates. वही we use the word clod or fragments when एग्रीगेट्स आर फॉर्म्ड आर्टिफिशियल. जो सॉइल मास फॉर्म हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ सम आर्टिफिशियल मीन्स लाइक योर टिलेज, ओके, या फिर प्लाविंग, जो प्लाविंग होता है पार्ट ऑफ टिलेज, और समथिंग नो प्लांट ग्रोइंग, वॉट एवर, बिकॉज ऑफ एनी अदर आर्टिफिशियली अगर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दैट एग्रीगेट. जो मास, सॉइल मास होता है, दैट्स कॉल्ड एज क्लॉड और फ्रैगमेंट. नेचुरली उनको पेड्स बोलते हैं. प्राइमरी पार्टिकल्स आर नथिंग बट द सैंड, सिल्ट एंड क्ले. Soil beds are natural, relatively permanent aggregates separated from each other by voids or the natural surfaces of weakness. मतलब अगर उनमें कोई what you'll say, कोई सिमिलर फीचर्स ऐसा कुछ नहीं है तो दे विल सेपरेट. सो उसी को यहाँ बोले नेचुरल सर्फेसिस ऑफ वीकनेस. पेट्स परसिस्ट थ्रू साइकिल्स ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग. ओके, नेचुरल वेटिंग एंड ड्राइंग, व्हाट यू विल से फ्रीजिंग एंड थॉइंग, उस तरह के फीचर्स, उस तरह के प्रैक्टिसेस की वजह से नेचुरली पेट्स आर फॉर्म्ड. Soil fragments and clods are artificial structural units formed at or near the surface of cultivation or frost action, but they are not called as beds. As we have already seen, they are called as clods or soil fragments. Okay. Stable aggregates are those that resist breakdown by disruptive forces, and unstable aggregates are those they can be broken down through disruptive forces like water, wind, etc. So ये हो गया हमारा एक, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्चुअली स्टार मार्क लगा के मुझे वहाँ ले जाना था. ओके, सो हमने देखा है प्राइमरी पार्टिकल्स, उनके एग्रीगेट्स क्या है एंड ऑल दैट. नाउ उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इनटू अ सर्टेन डिफाइंड पैटर्न्स, वी कॉल देम एज सॉइल स्ट्रक्चर. ओके, नाउ दिस जो भी सॉइल स्ट्रक्चर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए, प्लांट एस्टेब्लिशमेंट के लिए. सबसे पहले हमेशा सीड जर्मिनेशन होता है. ओके, सीड जर्मिनेशन के बाद प्लांट एस्टेब्लिशमेंट होता है. प्लांट को इट हैज टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन दैट, रूट्स सही से नीचे जाएंगे तब जाके वो स्ट्रेंथ लेगा, और दैट विल ग्रो ना, ऊपर शूट भी ग्रो करेगा एंड इट विल एस्टेब्लिश इटसेल्फ. उसके बाद होता है उसका ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ ऑफ द क्रॉप ग्रोथ. इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सॉइल स्ट्रक्चर. अगर वो सॉइल प्लेटी स्ट्रक्चर है, ओके, सो वहां से प्लेटी है मतलब उसके जो एग्रीगेट्स है वो बिल्कुल मतलब पैरेलली इस तरह से अरेंज किए गए. सो यहाँ से रूट को उसमें पेनिट्रेट होना बहुत मुश्किल है. ओके, वही ग्रैन्युलर है या फिर फ्राइबल टाइप का क्रम्बली स्ट्रक्चर है. सो उसमें पोर्स भी अच्छे रहते हैं वेर इन द रूट्स कैन easily penetrate. Okay, so structure plays a very important role in all these stages of the plant growth. ठीक है, नाउ सॉइल स्ट्रक्चर जो हम ये अभी क्या क्या वेराइटीज, आई मीन स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या है वो अभी हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. Now soil structure is denoted in the order of grade, class and type, that is GCT, important. Okay, तो अभी हम लोग देखेंगे what is a type.
शेप और फॉर्म एंड द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ द पेड्स, किस तरह से वो अरेंज्ड है, प्लेटी में अरेंज्ड है, ग्रैन्युलर में अरेंज्ड है, ओके या फिर प्रिज्म टाइप अरेंज्ड है, किस तरह के अरेंजमेंट है इन पेड्स का, ओके दैट विल गिव ए पर्टिकुलर शेप टू दैट, बेस्ड ऑन द शेप उसका नेमिंग रहता है, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास, कितने साइज का पेड्स है। थर्ड आता है ग्रेड, डिग्री ऑफ डिस्टिंक्टनेस ऑफ पेड्स, एक दूसरे से किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इन तीनों का अगर मिलाएंगे तो हमें सॉइल स्ट्रक्चर को डिनोट कर सकते हैं। अभी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्लास, क्लास में क्या आता है, साइज ऑफ पेड्स। So here the class of structure describes the average size of individual aggregates or the PEDs, right? Usually 5 distinct classes may be recognized in relation to the type of soil structure जो जहाँ से वो बनते हैं। सबसे पहले आता है वेरी फाइन टू वेरी थिन, फाइन और थिन, मीडियम, coarse or thick, very coarse or thick. These are the 5 classes, distinct classes जो सॉइल स्ट्रक्चर में आते हैं। द टर्म्स थिन एंड थिक आर यूज्ड फॉर प्लेटी टाइप्स, इसलिए वो भी आप पूछ सकते हो ना कि क्यों इस तरह से दिया है। वाइल द टर्म्स फाइन एंड कोर्स आर यूज्ड फॉर अदर स्ट्रक्चरल टाइप्स, जैसे कि प्रिज्म है, ग्रैन्युलर है, कई सारे हैं, क्रम्बली है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ये हो गया क्लास का। नेक्स्ट आता है ग्रेड्स, डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन, राइट। द ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर इज अ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एक्सप्रेसिंग द डिफरेंशियल between the cohesion within the aggregates and adhesion within the aggregates. Now cohesion मतलब क्या है, उनके बीच में एक्चुअली क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, उसमें जो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस टाइप के वो प्ले होते हैं वहां पे, दोज आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव मतलब बिल्कुल चिपक जाते हैं, ठीक है। कोहेशन मतलब वो थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं बट स्टिल दे आर क्लोज टू ईच अदर, सिंपल। In other words, it indicates the degree of distinctness of the individual pits. Grade of structure should be determined when the soil is neither unusually moist nor unusually dry. So किसी soil का हम लोग grade determine करना चाहते हैं, तो when can we do that? Always that kind of work should be taken up when the soil is neither unusually moist nor unusually dry. मतलब मीडियम वाटर जब रहेगा उस टाइम पे कर सकते हैं, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सॉइल स्ट्रक्चर का जो ग्रेड्स है बहुत सही से। एंड देर आर 4 मेजर ग्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर रेटेड फ्रॉम 0 to 3। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरलेस, जीरो। इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशंस इन विच देयर इज नो ऑब्जर्वेबल एग्रीगेशन और नो डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल लाइंस ऑफ वीकनेस, सच एज मैसिव स्ट्रक्चर्स वेयर द एंटायर सॉइल होराइजन अपीयर्स सीमेंटेड इन वन ग्रेट मास। मतलब यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा वर्क में है। सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, नॉन कोहेरेंट, वेयर द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल शो नो टेंडेंसी टू क्लिंग टुगेदर सच एज प्योर सैंड। यहाँ पे बिल्कुल प्योर क्ले टाइप का, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे पहला ग्रेड स्ट्रक्चरलेस। सेकंड आता है हमारा वीक स्ट्रक्चर। अच्छा 0 to 3, यस। These structures are poorly formed from indistinct aggregates. When removed from the profile, the soil material breaks down into a mixture of very fine entire aggregates, many broken aggregates and much unaggregated material. So immediately मतलब थोड़ा सा प्रेशर पड़ते ही ये टूट जाता है ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा सॉरी थर्ड वन ना, moderate structure. The structures are well formed with distinct aggregates, moderately durable and evident, but not distinct in undisturbed soils. When removed from the profile, the soil material breaks down into a mixture of many distinct, okay, entire aggregates, some broken aggregates and little unaggregated material. So ये आप समझ सकते हो, weak structure वो है जहाँ पे सैंडी सॉइल्स के लिए, मॉडरेट स्ट्रक्चर उनके लिए है जो लोमी टाइप के सॉइल्स है, एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स वहां पे है जहाँ क्लेई टाइप, यू कैन सी हियर फोर्थ टाइप। These are well formed distinct aggregates that are durable and quite evident in undisturbed soil. अगर soil disturbed भी नहीं है फिर भी you can, all these we are doing when the soil is undisturbed,
Please note. Okay. When removed from the profile, the soil material consists very largely of entire aggregates and includes few broken ones and little or non-aggregated material. So free soil तो बहुत कम है, free aggregates. Always entire aggregates से आपको उसमें मिलेंगे जब when we try to break it down. So these are the four grades of the structure. अब next आता है types. इन्हीं के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर आता है. सबसे पहले हमारा ग्रैन्युलर. नाउ दिस रिजेंबल्स कुकी क्रम्स एंड यूजुअली लेस देन 0.5 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर. जो उनके जो पेड्स एग्रीगेट्स है वो commonly found in surface horizons where roots have been growing. एंड ग्रैन्युलर का ही एक और इसी में टर्म आता है क्रम्बली नेचर. And now this crumbly nature of soil is very important for plant growth because इस nature of soil में ही soil structure में you can say soil structure itself, इसी में हमें the right amount of micropores, right amount of macropores. यस, प्लांट ग्रोथ के लिए हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रोपोर्स रहने से क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सही रहेगा. मैक्रोपोर्स सही मात्रा में रहने से क्या होगा, विल हैव गुड अमाउंट ऑफ सॉइल एयर which is very much required for the soil, the root growth and nutrients and all that. So for that crumbly nature of soil structure is very important. So question ऐसे भी आ सकता है, which kind of soil structure is very important for a plant growth. Okay, उसके लिए you can say that crumbly nature or crumbly type of soil structure. Okay, next आता है blocky, as you can see in the form of blocks, irregular blocks that are usually 1.5 to 5 centimeters in diameter. Prismatic, as you can see, vertical columns जो aggregates form हो रहे हैं वो columns में form हो रहे हैं. So vertical columns of soil that might be number of centimeters long, usually found in lower horizons. मतलब जो बी या उसके नीचे जो होराइजन है वहां पे इस तरह का दिख जाते हैं. कॉलमनर, ये भी प्रिज्मेटिक टाइप के लगते हैं लेकिन वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द सॉइल दैट हैव ए सॉल्ट कैप एट द टॉप, फाउंड इन सॉइल्स ऑफ एरिड क्लाइमेट्स. नाउ यू कैन फाइंड दीज काइंड ऑफ सॉइल्स इन ड्राई रीजन्स, एरिड रीजन्स, जहाँ पे बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर लॉस एक लेयर, सॉल्ट लेयर भी बनने के चांसेस है ऊपर. Platy, thin flat plates of soil that lie horizontal, as you can see here, usually found in compacted soil. So यही इसी ये soil generally कहाँ मिलता है हमें, सब soils में. Okay, when you'll find this kind of soils, when there is lot of movement of vehicles on the top and continuous tillage that happens, that too in the superficial layers of the soil. जो deep tillage के अलावा कुछ जो भी टिलेज होता है, इन दैट केसेस सबसॉइल्स विल फाइंड दिस प्लेटी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट आता है सिंगल ग्रेन, मतलब बिल्कुल सैंडी सॉइल. सॉइल इज ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट डू नॉट स्टिक टुगेदर. ओके, ऑलवेज अकम्पनीज अ लूज कंसिस्टेंस कॉमनली फाउंड इन सैंडी सॉइल्स. ठीक है, सो ये हो गया हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स अरेंजमेंट. एंड एज यू कैन सी है जो अभी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे है. दिस अगेन आई हैव एडेड मेजरली फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट. अगर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए आपको कंटेंट चाहिए तो यू कैन गो थ्रू दिस, अदरवाइज जो अभी डिस्कस किया वही यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है, तो अभी तक हमने देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा बल्क डेंसिटी. ना व्हाट इज डेंसिटी एज सच, सिंपल मास बाय वॉल्यूम, राइट उसका. सो हियर आल्सो इट्स द सेम थिंग, मास बाय वॉल्यूम ही है. एंड इट इज एन इंडिकेटर ऑफ सॉइल कॉम्पैक्शन. एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड, इसकी बेसिस पे हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड में सॉइल कॉम्पैक्शन किस तरह से है, हेवीली कॉम्पैक्टेड है या reasonably compacted है for the plant growth. So it is calculated as the dry weight of the soil divided by its volume. Now bulk density, दो तरह के densities होते हैं, एक तो particle density and bulk density. ओके, बल्क डेंसिटी में आपका वॉल्यूम, जो जब भी हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पे, दिस विल इंक्लूड बोथ द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द पोर्स. प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप
because based on this only the values of the bulk density and particle density varies. ओके वो भी समझना है हमें. सो बल्क डेंसिटी रिफ्लेक्ट्स सॉइल्स एबिलिटी टू फंक्शन फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वाटर एंड सोल्यूट मूवमेंट एंड सॉइल एरेशन. हाउ? बिकॉज यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ द पोर्स भी देख रहे हैं. इसमें मैक्रोपोर्स भी हो सकते हैं एंड माइक्रोपोर्स भी हो सकते हैं. एंड दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर सॉइल का स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसमें हमें जितना माइक्रोपोर्स चाहिए उतना है या नहीं, जितने मैक्रोपोर्स चाहिए उतने है या नहीं, दैट विल बी अंडरस्टूड बाय द बल्क डेंसिटी ऑफ ए सॉइल. सो इन सिंपल स्ट्रक्चर सॉइल टेक्सचर ये दिया है सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल्स एंड क्लेई सॉइल्स. उसमें आइडियल बल्क डेंसिटीज कितना होना चाहिए एंड बल्क डेंसिटीज दैट रेस्ट्रिक्ट द रूट ग्रोथ, मतलब उनकी वजह से रूट ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. सो आइडियल बल्क डेंसिटी ऑफ सैंडी सॉइल्स इज लेस देन 1.6, सिल्टी सॉइल्स इज लेस देन 1.4 एंड क्लेई सॉइल्स इज लेस देन 1.1. नाउ बल्क डेंसिटी कितना होगा तो इन पर्टिकुलर सॉइल क्लासेस, टेक्सचरल क्लासेस में प्लांट का ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सकता है. सो हियर ग्रेटर देन 1.8, सिल्टी सॉइल्स में ग्रेटर देन 1.65, क्लेई सॉइल्स में ग्रेटर देन 1.47. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द जो भी उसका वॉल्यूम है. ओके, बिकॉज दैट इंक्लूड्स द वॉल्यूम ऑफ पोर्स एज वेल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए हैं. आइडियल बल्क डेंसिटी ऑफ सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड ऑल दैट. सो प्लीज इसको सही तरीके से देख लीजिए. ठीक है. इन क्ले सॉइल्स उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है. सी, इन क्ले सॉइल्स देर इज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पोर स्पेस बिकॉज द पार्टिकल्स आर very small and many small pore spaces fit between them. So here percentage of pore spaces is more, thereby total pore space जब देखेंगे तो that would be more in clay soil. Okay, clay soil में pore percentage, pore space percentage 58% है on an average. So कई बार हमें लगता है ना माइक्रोपोर्स होंगे तो पोर स्पेस किस तरह से होगा, राइट? That would be high in clay soils. Sandy soils usually have larger but fewer pore spaces. So here percentage of pore space is less. So less in sandy soil overall pore space. The presence of organic matter decreases the bulk density. Very very important. And the tillage operations too causes a decrease in bulk density. Now this is the one that promotes the seed germination या plant establishment या फिर plant growth. So again here textural classes दिया है on an average sandy soil, loamy soil, silt loamy soil, clay soil में on an average कितना bulk density होगा. यहाँ पे पूरा हम लोग सभी तरह के क्लेई सॉइल्स आएंगे इसमें. सो डोंट गेट कंफ्यूज मैम, यहाँ पे आपने लेस देन 1.1 दिया, यहाँ तो 1.1 है. This is because all kinds of clay soils I'm considering here. Here all kinds of soils जो हमने पहले sandy soil, loamy soil, clay soil किया था ना textural classes में 3 groups में, उन groups की बात हो रही है. यहाँ पे basically थोड़ा और क्या बोलते हैं थोड़ा और इन डेप्थ टाइप में हम लोग गए हैं. ठीक है. एंड हियर दिस इज द पोर स्पेस परसेंटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये कई बार मैंने देखा है कि जब बच्चे इस ये वाला क्वेश्चन जब भी पूछते हैं ना, परसेंटेज ऑफ पोर स्पेसेस कौन से सॉइल्स में सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले आंसर करके आते हैं सैंडी सॉइल्स. बिकॉज ऑफ माई सेल्फ विटनेस दिस मेनी अ टाइम्स. ये कई बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, कई बार स्टूडेंट्स गेट दे फॉल्टर ऑन दिस. सो इसलिए मैं इतनी बार 10 बार मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिकल डेंसिटी. सिंपल बल्क डेंसिटी में हमने वॉल्यूम ऑफ द ड्राई मैटर दैट इज द सॉइल पार्टिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ द पोर्स लिया है. बट हियर पार्टिकल डेंसिटी में विल टेक द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पार्टिकल इटसेल्फ, नो मोर वॉल्यूम ऑफ द पोर्स.
Okay, so a soil particle has no pore space and is nothing more than a very small piece of rock. That's true. So particle density is the weight of an individual soil particle per unit volume. उसी का volume ले रहे हैं हम. Again, particle density भी सिर्फ density है तो obviously that would be mass by volume. So gram per centimeter cube ही रहेगा. In simpler terms, a soil particle that is 1 cubic centimeter in volume weighs 2.66 grams, because average value of particle density of soil, it is 2.66 grams per centimeter cube. Important. And when we talk about particle density, this is also known as the real density or the gain density or the absolute density. It lowers when organic matter is added to the soil, because उस जो बाकी वॉल्यूम है उसका बढ़ेगा. Generally, bulk density is half of the particle density approximately. Why, can anyone tell me? Generally, the bulk density is half of the particle density. Yes, anyone? बहुत easy, logic apply कीजिए. Yes, because of the pose. Very good, Tutu. Yes, so ये भी important है. This is also important. अरे ये क्या हो गया? Okay. Yes, this is also important हमारे लिए. Okay. And this is also important. इसलिए मैंने actually बहुत कुछ bold में ही रखा है. सो ये हो गया हमारा सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी. अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ सो दैट इन अनदर 10 मिनट्स विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस. कल सॉइल कलर बाकी सब भी करेंगे एंड विल डू सम मोर क्वेश्चंस एज प्रॉमिस्ड. आज क्वेश्चंस थोड़े से कम है. कहाँ पे रखा है मैंने क्वेश्चंस? ये बेसिस है कल वाले टॉपिक के ऊपर. ठीक है. यस, आ गया है. Deep summer plowing is often. Acha, one more thing I want to highlight is, what I'm planning is, देखिए आज मैं कुछ कंटेंट करूंगी. फॉर एग्जाम्पल टुडे आई हैव डन द कंटेंट ऑन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के कुछ टॉपिक्स, राइट? एंड वी हैव डन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, राइट? सो इन दोनों का हो गया. मतलब इनके ऊपर जो आज जो भी पढ़ाया है, इनके ऊपर जो भी एमसीक्यूज होंगे, विल बी डूइंग देम टुमारो. सो ये टुडे हो गया. सो टुमारो विल बी डूइंग द एमसीक्यूज. सो दैट ये क्लास होने के बाद मैं आपको कंटेंट दे दूंगी. पीडीएफ तो मैं दे ही रही हूँ. यू कैन एटलीस्ट रिवाइज वंस एंड नेक्स्ट डे व्हेन वी डू एमसीक्यूज, कुछ आपको डाउट्स आते हैं, देन वी कैन गेट दोज डाउट्स क्लैरिफाइड. नॉर्मली क्या हो रहा है, मैंने जो नोटिस किया है, मैं उसी दिन कंटेंट लेके उसी दिन क्वेश्चंस पूछूंगी. तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, एटलीस्ट एक रीडिंग नहीं दोगे ना, आपको जो भी आपको नहीं समझ में आया वो आपको पता नहीं चलेगा. ओके, सो गिव ए गुड रीडिंग टू दैट. ओके, नेक्स्ट डे विल बी डूइंग एमसीक्यूज. उससे आपका ज्यादा बेनिफिट रहेगा. जो बेस्ड ऑन द लास्ट 1 वीक से जो मैं पढ़ा रही हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस डाउट्स आ रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट आई फेल्ट दैट दिस वुड बी द बेस्ट वे टू फॉर यू for to make you go through the content and come to the class. Hope it is okay. ठीक है, चलिए. Deep summer ploughing is often recommended to be done. Yes, to be done during the pre-monsoon period. Now, which of the following is the most significant reason for this recommendation? Yes. Option C, ma'am, to coincide with Okay. the fig wheat growth, yeah. Because Okay. You keep on yeah. asking in the chat box. मैं देख लूंगी. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि फिर सब लोग बोलते रहेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, लास्ट में कुछ डाउट्स है तो उसमें तो अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा. यस. यस, सही से देखा आपने? See here, this is objective important to recharge the soil profile with moisture and facilitate immediate sowing after monsoon onset.
ओके, दिस इज द मेजर। सी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शंस हमें लगता है यस वीड इन्फेस्टेशन रिड्यूस करने के लिए ही है, बट इट डजंट कोइंसाइड विद द पीक वीड ग्रोथ, क्योंकि उस टाइम पे कुछ है ही नहीं, वीड्स आएंगे बट इट इज नॉट द पीक वीड ग्रोथ पीरियड। ओके, सो ये बिल्कुल रूल्ड आउट है। टू मैक्सिमाइज सॉइल टेम्परेचर एंड एनहांस माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये भी नहीं है। ओके, मैक्सिमाइज तो कर रहे हैं सॉइल टेम्परेचर, नॉट टू एनहांस बट रादर देन किल द पेस्ट एंड डिजीज इंड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। To synchronize with the onset of monsoon rays and minimize soil erosion, ये भी है, लेकिन when we talk about the basic objective ये सबसे फिट बैठता है। अगेन दिस इज ऑल अप्लाइड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, इसमें जब तक आपको कंटेंट सही से समझ में नहीं आया यू विल बी नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। सो प्लीज आज से जो भी कंटेंट दे रही हूँ फिर से रिवाइज कीजिए, and if you have any doubts I'll be more than happy to revise even it 10 times also, no problem, but आप please clear रहिए because this is the kind of questions जो applied questions इसी तरह से आएंगे। ठीक है, if not all, अगर 100% में 20% ही आते होंगे applied sort of questions, but that also would make a huge difference on the scores finally. Okay, so यहाँ पे D is the correct option. Please be very very careful while answering. Next, what is the primary mechanism by which ridges and furrows formed in fields contribute to soil and water conservation? Now, what is the primary mechanism? किस तरह से वो ridges and furrows will be contributing to soil and water conservation? इस question का मतलब ये है. Yes, which one do you think would fit best from the options? ऑप्शन सही से देख लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन मीन करेक्ट आपको लगता है लेकिन वो पार्शियली भी ट्रू हो सकता है या फिर पार्शियली ही वो ट्रू है और दूसरा ऑप्शन में सब कुछ है। ओके, दैट फिट्स वेल विद दिस क्वेश्चन, सो प्लीज रिविजिट द ऑप्शंस एंड आंसर। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं मुझे, कई बच्चे बोल रहे हैं कि बी है, कुछ बोल रहे हैं कि सी है। यस, एक्चुअली इट इज B, because this acts as a continuous barrier to the free movement of water downwards, increasing the infiltration time. Yes, ये जो नेक्स्ट वाला भी सी जो बोल रहे हैं वो भी करेक्ट है, बाय क्रिएटिंग ए कंटिन्यूस बैरियर ऑफ लैटरल वाटर मूवमेंट रिड्यूसिंग सॉइल एरेशन, वो भी है, लेकिन प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है उसका? फ्री मूवमेंट को बिल्कुल रोक रहा है। नाउ व्हेन वी टॉक, जैसे रिडजेस एंड फरोस ऐसे हैं, सो यहाँ पे फ्री मूवमेंट रोक रहा है, बिकॉज ऑफ विच इट विल गेट मोर टाइम फॉर द वाटर टू इनफिल्ट्रेट इनटू द सॉइल, राइट? सी अगेन सी भी करेक्ट ही है, बाय क्रिएटिंग कंटिन्यूस बैरियर ऑफ लैटरल वाटर मूवमेंट रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, लेकिन यहाँ प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है उसका? दिस इज व्हाट इट्स प्राइमरी मैकेनिज्म इज। revisit the content again and you will get it. Okay, yes, moving on to our next question. What is the approximate percentage reduction in soil erosion that can be achieved through contour farming alone on moderate slopes? कितना हम लोग soil erosion को रोक सकते हैं with contour farming? Simple, on moderate slopes. अगर स्लोप ज्यादा है मोर देन 10-15%, हमने वो भी देखा था कि दे हैव टू, इट हैज टू बी क्लब्ड विथ अदर प्रोसीजर्स। अदरवाइज नॉर्मली देखा जाए तो यस, हाउ मच परसेंटेज रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन कैन बी अचीव्ड? अगेन ए प्योर स्ट्रेट क्वेश्चन है, अगर आपने कंटेंट देख लिया है देन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। अच्छा, कल मैंने कंटेंट शेयर नहीं किया था, आई विल शेयर द कंटेंट टुडे। नो, आई हैव शेयर्ड, आई थिंक नहीं किया, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। इट इज 50%। ओके, next, what is a maximum slope steepness on which grass barrier strips can effectively function as a soil conservation measure?
यस, ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है। कितना मैक्सिमम स्लोप के लिए ग्रास बैरियर्स कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली soil conservation as part of soil conservation measures. Okay, here it is 30%, 30% तक कर सकते हैं. Now, what is the primary objective of plowing slopy land across the slope resulting in corrugation? Now, corrugation क्या है? आपने कभी कार्डबोर्ड बॉक्सेस देखा है? जो क्या बोलते हैं, उनको कॉरिगेटेड बॉक्सेस भी बोलते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, बिकॉज उनके बीच में आपने देखा होगा इस तरह से एक रहता है बहुत छोटा सा, दैट विल एक्ट एज ए कुशन. ओके, नाउ दीज आर नथिंग बट द कॉरिगेशन. सो जब व्हेन वी प्लाउ अक्रॉस द स्लोप, छोटे छोटे कॉरिगेशंस बनते हैं ऐसे, ओके, अक्रॉस द स्लोप, दैट विल हेल्प इन वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन. यस, what can be the option here? What's the primary objective? Yes, it is B here, to reduce the length of runoff and increases the infiltration time thereby. Similar to the earlier question, right? Yes. Now again, direct question. What is the optimal slope range for planting vegetative barriers such as vetiver or lemongrass to effectively control soil erosion? कितने slope के लिए तक vegetative barriers effective रहेंगे individually without clubbing with any other option, with any other measure? यस, ये भी हमने क्लियरली डिस्कस किया था. स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है अप्लाइड दिस थिंग. कंटेंट आपने देख लिया है तो मतलब रिवाइज कर लिया तो इट वुड बी इजी. मैंने इसलिए बोला है सिंगल सिंगल, विदाउट क्लबिंग विथ एनी अदर. when we talk about vegetative barriers less than 1% slope, ओके, इंडिविजुअली देखेंगे तो, क्लबिंग जब करेंगे तो इवन 5 to 10% और मोर देन दैट आल्सो दे कैन सर्व. प्लीज एक बार देख लीजिए. Now, which of the following intercropping systems is commonly practiced in northeastern region of India? Yes, ये भी थोड़ा सा इजी है. Yes, it is B. June cultivation based intercropping with paddy, maize and legumes. Especially paddy plus legumes बहुत ज़्यादा चलता है, especially in the midlands and the uplands of north east. Exclusively अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आता है. ठीक है. Next, crop rotation is often practiced on sloping soils due to its benefits. Now, which of the following best explains why crop rotation is advantageous in such conditions? Yes. इसमें ऑप्शंस थोड़े से इजी हो गए हैं, राइट? Yes, here it is A, that is the answer. Yes, all of you are correct here. It minimizes the soil erosion and enhances soil fertility by alternating deep-rooted and shallow-rooted crops. Strip cropping is considered a more intensive practice for conserving rainwater compared to contouring. However, its effect on soil erosion is not as significant as terracing and bunding. What could be the primary reason for this difference? Yes, ऑप्शंस बिल्कुल सही से देख लीजिए.
we are saying that impact of strip cropping is not as significant on soil erosion. Why? What is the reason? क्या बोल रहे इतना हैं? Strip नहीं है. cropping is considered a more intensive practice for conserving soil compared to contour, however. I feel like C में वैसे. Okay. See here. C is the correct answer. Why? See, strip cropping mainly slows down the water runoff, but it does not create physical barriers like terraces and bunds to trap the soil. कई बच्चों ने आपने बी भी लिखा है. स्ट्रिप क्रॉपिंग वर्क्स ओनली इन द लो रेनफॉल रीजन्स मेकिंग इट इनएफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग इरोजन. ऐसा कुछ नहीं है. ओके. स्ट्रिप क्रॉपिंग improves soil fertility but has no impact on controlling water movement. No, it has. Strip cropping replaces the need for any other soil conservation measure including. No, ऐसा नहीं है. So this is the जो जितने भी options है वहां पे this is the Gas one कर that रहा fits best. था. कौन है ये जो 1 second प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है वो? मैंने अपना म्यूट कर लिया क्या? Okay, moving on to our next question. Which of the following best describes the primary objective of permanent or temporary buffer strip cropping in soil conservation? Yes. हमने देखा है परमानेंट और टेम्पररी बफर strip cropping. It is one of the types of strip cropping. Yes. Read the options properly. Okay, जब mixed answers मिल रहे हैं, let us have a look at the options. सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं. prevents water erosion by alternating tall and short crops in strips arranged perpendicular to the prevailing wind direction. एक तो wind direction बोल रहे हैं हम लोग. Okay, we are talking about that and we are talking about preventing wind erosion. Okay, that too with the tall and short crops in strips. Okay. It focuses on reducing water erosion on critical areas such as steep or highly eroded slopes by establishing a protective strips of vegetation. Now, when we talk about this permanent, इसमें बिल्कुल fit बैठ रहा है. Okay, we are trying to, because when we talk about permanent or temporary buffer strips, ये दोनों के लिए use होंगे. Okay, it's not that कि विंड इरोजन या वाटर इरोजन के लिए जहां पे भी स्टीपनेस ज्यादा रहेगा या हाईली इरोडेड स्लोप्स रहेंगे या जहां पे भी बहुत हाई विंड, उन सभी केसेस में ये यूज होगा. ठीक है. बट ये बिल्कुल वर्डिंग गलत है. सी. इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग क्रॉप्स इन पैरेलल बैंड्स अक्रॉस द स्लोप but does not necessarily follow contour lines primarily to manage the water flow. ये water flow manage करने के लिए नहीं है. ओके, सो ये भी रॉन्ग है. प्लांटिंग वाला बिल्कुल परपेंडिकुलर अक्रॉस द स्लोप एंड ऑल दैट दे हैव डन वेल, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल गलत है.
It is a technique used only in dryland farming to increase soil moisture retention by alternating deep rooted, ऐसे deep root वाला system ही नहीं है यहाँ पे. Okay. So लॉजिक के हिसाब से हम लोग निकालते रहेंगे तो बी वुड बी द राइट फिट हियर. ओके, सो हियर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, which of the following statements best explains why mulching is considered one of the simplest and the most beneficial soil and moisture conservation practices? Again, look at the questions properly and then answer. सॉरी, मैं फिर भी आज भी टाइम ज्यादा ही ले रही हूँ. यस. Good. Yes, it helps retain soil moisture, control weeds, reduce erosion by covering the soil with organic or inorganic material, improving crop productivity. Okay, ये सारे भी आते हैं इसमें. Next question. Sorry. What is a primary objective? 1 second. What is the primary objective of using a subsoiler in agriculture fields? आंसर देख लिया? See, to invert and turn the soil, subsoiling में तो inversion होता ही नहीं है, soil inversion. To compact the soil, compact actually कम करना है, compact करना नहीं है. To remove crop residues नहीं, ये तो secondary tillage का है. To decrease soil erosion and compact soil, decrease the soil erosion तो है, लेकिन compact soil नहीं है. To loosen and aerate the soil while minimizing the soil disruption, ये true है. So here B is the correct answer. Okay. एक और question है क्या? Yes. How does increasing soil organic content contribute to water retention and why is it critical for sustainable agriculture? Yes. Yes, here in this case, A is the correct answer. Because organic matter enhances soil porosity, allowing more water infiltration and reducing runoff, thus improving the drought resistance in those areas. Okay, इसमें भी options थोड़े से easy है. So here I am winding up. Yes, अगर कुछ questions है तो आप पूछ सकते हो. Or else I'll wind up the session today. Yes. कोई questions है? Any queries, questions, comments on today's session? Any suggestions that you might have? If not, I'll wind up. अभी सौरभ सर आ जाएंगे. Yes. No questions? ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में पीडीएफ सर को दे दूंगी. They'll circulate the PDF with you. आप एक बार देख लीजिए and tomorrow we'll have MCQs on that. Okay. So shall I wind up? It's already 7:15. If you have any queries or questions, you can ask me. Okay, thank you very much. Students good night भी बोल रहे हैं, मतलब आप wind up कर दीजिए. Don't wait. Thank you. I got the message. Anyways, thanks a lot. You have been a great audience. Thank you very much. तो कल मिलेंगे. And please take good care of yourself. Bye bye. Good night.